ओके, फाइनली फाइनली विचर 4 का ट्रेलर ड्रॉप हुआ है। ट्रेलर तो नहीं, टेक डेमो बोल सकते हैं, जहाँ वो लोग टेक्नोलॉजी डिस्प्ले वगैरह करेंगे कि विचर 4 कैसा होगा। ग्राफिक्स वगैरह वो लोग एक्सप्लेन करेंगे, क्या क्या टेक्नोलॉजीज यूज़ हो रही है, इम्प्लीमेंट हो रही है, वो देखेंगे। तो लेट्स सी भाई कैसा बना है विचर 4। सो लेट्स कंटिन्यू। स्टेट ऑफ अनरियल। ओके ओके। अबे ये तो एक्चुअल गेम प्ले नहीं है, देखो नीचे लिखा है टेक्निकल प्रेजेंटेशन नॉट एक्चुअल गेम प्ले। Break me pearlies on this blasted pit-ridden tract. यानी मेरे हिसाब से ऐसा हुआ कि गेम ऐसा हो सकता है। तो आई थिंक उन लोग ने कुछ अनरियल इंजन पे एक बेस लेवल का कुछ बनाया था उनने रिप्रेजेंटेशन के लिए। भाई पर ऐसा लग रहा है तो अच्छा होगा अगर इस लेवल पे अचीव कर लिया उन लोग ने गेम तो, क्योंकि भाई एक्सप्रेशंस वगैरह तो अच्छे लग रहे हैं। भाई डिटेलिंग खतरनाक है। ओके ओके। सीरी 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 आ गई। सीरी बड़ी हो गई ना इसमें। मेन जो रहेगी वो सीरी रहेगी विचर 4 में। Almost had me fooled, Fruin. भाई तगड़ा बना है टेक डेमो। ओ भाई 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 भाई। भाई ट्यूनिंग बढ़िया है, देखो रोंगटे खड़े कर दिए। Thank you. Thank you, everyone, and welcome to the State of Unreal at Unreal Fest Orlando. We're here to show you what's next with Unreal Engine and so much more. We are thrilled that you're able to join us. Thank you. But first things first, I'm here with Sebastian and Kitek from CD Projekt Red. We have a lot to talk about. Hey, guys. Hey. Thank you, Wyatt. Thank you, Wyatt, and hello, everyone. With The Witcher 4, we're stepping things up. And to do that, we needed the right partner. One that truly understands that great open-world games are all about art and technology coming together. Yeah, and look, our goals are completely aligned here. And around the launch of UE5, your awesome team at CD Projekt Red announced a collaboration to make open-world development in Unreal even better. And it's an opportunity, we just couldn't pass it up. So we've been working on a technical demo together to achieve just that. I think we should take a look at it. You guys ready? Born ready. Kitek is going to play the build for us. Sure, let's do it. अच्छा, तो जितना मुझे समझ में आया है तो आई थिंक अनरियल का कुछ अपडेट वगैरह है। 5.6 बोला नहीं लोग ने अनरियल इंजन 5 का, तो वो क्या क्या अचीव कर सकता है उसके लिए उन लोग ने विचर 4 को यूज़ करके एक स्मॉल एरिया अनरियल इंजन में ही बनाया उन लोग ने। और
विचर 4 का एक, आई थिंक ये लेवल भी होगा जब एक्चुअल गेम प्ले आएगा, बट उस लेवल को उठाया जो ओरिजिनल विचर 4 का, उनका उनका जो वर्ल्ड बिल्डिंग है विचर 4 का, जो उनकी सोच है कि वो लोग ऐसा ऐसा बनाने वाले विचर 4 की, सीडी प्रोजेक्ट रेड, उन लोग ने बताया कि हम एक ऐसा लेवल बनाएंगे। वो सेम लेवल उन लोग ने उठाया और अनरियल इंजन में वो छोटा सा लेवल उनने बना के, सिर्फ अनरियल इंजन का जो अपडेट आया उसका पोटेंशियल दिखाने के लिए वो विचर 4 का लेवल बनाया। और अभी वो जो लेवल उनने अनरियल इंजन में बनाया है वो लोग शोकेस कर रहे हैं, नॉट द एक्चुअल गेम प्ले जो वो लोग बनाने वाले हैं। तो अभी तक मुझे इतना समझ में आया है। तो इसमें वो बताएंगे कि उनका टेक्निकल एक्चुअली रहेगा कि ये अचीव कर सकता है अनरियल इंजन। तो वो विचर 4 की हेल्प से वो लोग बताने वाले हैं, आई थिंक वही करने वाले हैं। This is a technological showcase set in the world of The Witcher 4. What you just saw and are going to see now is running on a standard PlayStation 5 at 60 FPS with ray tracing. So in the ओके, game, you'll be playing as Ciri, a professional monster slayer, a witcher. She explores the world and hunts down monsters for coin. The region we are in is called Kovir, and you'll get to explore it in a game. Right now, Ciri is investigating a monster, and after gathering new clues, she is heading back to a nearby village. All right, everyone, meet Kelpie. Let weeds be weeds, Kelpie. So just like Geralt had Roach, Ciri has her own loyal companion. We return to town. भाई इसमें डिटेलिंग ये देखो, यहाँ पे जो इनका हेयर है और ये जो क्लॉथ है, फैब्रिक, भाई बढ़िया है। अगर ये अचीव कर लिया, और प्लस ये प्लेस्टेशन पे, बेस प्लेस्टेशन पे 60 FPS पे चल रहा है। These two characters need to feel like one. Since you're gonna explore the world on horseback, riding needs to feel seamless, natural, and just fun. Yeah, and to support that, we're introducing multi-character motion matching in Unreal. So Ciri and Kelpie, they're perfectly synchronized when mounting from any angle and speed. And we also support root motion movement on Kelpie, so controlling her feels realistic and grounded. And there are also some really nice improvements to our Unreal Chaos Flesh Solver and these machine-learned deformations. So you've got realistic. भाई पता नहीं ये वीडियो में दिख रहा होगा कि नहीं, क्योंकि यूट्यूब साला कंप्रेस कर देता है बहुत तगड़ा भाई, पर इसमें नसें दिख रही हैं इसकी, एक एक नसें। और बोलते हैं ना, जो हड्डियाँ होती है, रिब केज की हड्डियाँ थोड़ी थोड़ी सी उनकी लाइनिंग दिखती है, वो तक दिख रही है इधर। मसल्स वसल्स, एक एक मसल्स का वो होता है, क्या बोलते हैं उसको, मसल फैब्रिक बोलते हैं ना, आई थिंक क्या बोलते हैं पता नहीं, वो तक दिख रहा है। भाई साहब डिटेलिंग तो Muscles moving बहुत and stretching ज़बरदस्त under है। Kelpie's skin without compromising the performance there. ओके हाँ, तो वही वो लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। So let's leave Ciri behind for a second and talk about the world itself. So much of the Witcher world is natural, organic, especially Kovir with its dense forest and wild nature. Yeah, and wild nature is hard. And with nanite geometry, we've freed artists from so many of their old constraints. But we don't want to rest until everything we do in Unreal has that same spirit of freedom. There's always more work to do. And foliage is a huge piece of that puzzle. So we are excited to introduce nanite foliage. And in order to achieve gorgeous foliage density everywhere, while still being memory efficient, fast to render, we believe that. ओके, सो आई थिंक इन लोग ने नैनाइट का जो कॉन्सेप्ट था अनरियल इंजन का, वो अब फोलिएज में भी अच्छी तरह इम्प्लीमेंट कर दिया है। अच्छी भी लग रही है जो इसकी फोलिएज वगैरह है, जो फॉरेस्ट वगैरह है, एक्चुअली में अच्छा लग रहा है। That a new idea was needed. So instead of the same card approach we've been using for the past 20 years, artists should be free to take a card approach we've been using for the past 20 years. Artists should be free to take a nanite approach to foliage, modeling every single leaf and pine needle. And the old LOD tricks of the past, they needed a complete rethink. And in their place, it's a new adaptive voxel representation in nanite.
It's volumetric, it's fully 3D, it is super fast to render. And these dense clusters of triangles turn into these cubes, which at a distance, they're no larger than a pixel, and they react to the changing light of our dynamic sun and our shadows, and they allow artists to render whatever amount of foliage is needed to achieve their vision without compromise. And no compromise means how ambitious we are when it comes to bringing our vision to life with incredible visuals. But more than that, together with Epic, we created faster way to load the world. We can now bring in more content more quickly for the smoothest possible experience as we fly down to catch up with Siri. Welcome to Valdrest. So Valdrest is a port town, a hub for fishing, trade and mining. It's one of those places where you can meet shady characters or overhear gossip from other lands. It's also where Ciri took on her current contract. High-tech, let's leave Kelpie here and explore the marketplace and food. And the missus? I'm so excited we can finally show you some of this stuff. Let's see what Valdrest has to offer. Bugger. Not her again. Hey, not even at the Lan Exeter Fair! Now, 9 gazes while I present him with a fish. For the furry rascal will often wink, and the bear's weight grants good. भाई जितना इन लोग ने एआई वगैरह दिखाया है ना, जो एनपीसीज का एआई वगैरह है, एक्चुअली में अच्छा दिख रहा है, बट भाई धोखा ना दे दे बस वो, क्योंकि ये एक्चुअल गेम प्ले नहीं है, सिर्फ टेक्निकल प्रेजेंटेशन है। तो भाई इसमें तो कुछ ज़्यादा ही अच्छे दिख रहे हैं एमपीसीज और उनके बिहेवियर। तो देखते हैं भाई रियल गेम प्ले में भी ऐसा हुआ तो जो वाइब है गेम की पूरी वो बहुत नेक्स्ट लेवल हो जाएगी, क्योंकि इंटरैक्टिव जितनी भी गेम्स होती है ना, और ये नेक्स्ट लेवल इंटरेक्शन होगा अगर गेम में, जैसा अभी डेमो में दिख रहा है, तो भाई मे बी शायद वो टाइम वापस आ जाए जब हम लोग स्काईरिम वगैरह खेलते थे, क्योंकि तब के टाइम में स्काईरिम और वैसे ही एल्डर स्क्रॉल के अलग गेम है, फिर विचर की भी जो पुरानी गेम्स थी विचर 3 वगैरह, उसमें इंटरेक्शन था वो नेक्स्ट लेवल का था। जो अभी जितनी गेम्स आ रही है उसमें इंटरेक्शन इतना अच्छा नहीं हो रहा, इतनी ऑप्टिमाइज नहीं है गेम, इतना वो लोग डिटेलिंग पे काम नहीं कर रहे हैं। अगर वापस से वो पहले वाले एरा की तरह इंटरेक्शन आ गया तो भाई गेमिंग वापस राइज कर सकती है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। Guys, notice how देखो एक और responsive the इंटरेक्शन world का is. वो जो बताया था मैंने, Character अब ये actions directly हाँ affect भाई what बहुत happens around you. Sometimes बहुत सेक्सी, बहुत सेक्सी। अगर ऐसा इम्प्लीमेंट कर दिया तो भाई मज़ा ही आ जाएगा। even setting off chain reactions. Everything is working together. Oh, look at this poor gentleman being taught how to fly by an angry innkeeper. That's what happens when you cheat at Gwent. Last of it, is it? Ready to भाई बहुत कुछ है देखने के लिए, क्योंकि ये 10-20 सेकंड में इतनी सारी चीज़ें हो गई ना, अभी इसको 3-4 बार और देखेंगे तो नई नई चीज़ें देखने मिलेगी। जैसे कि इससे पहले जो देखा था हमने कि सीरी एक आदमी से टकराई थी जिसके हाथ में वो बास्केट था जिसमें से एप्पल्स गिरते हैं, तो मे भी शायद उधर तक ही रख सकते थे, बट बिहेवियर बहुत एडवांस लेवल का तब देखा हमने कि जो एप्पल गिरे थे तो पीछे से एक बच्चा आया, वो एप्पल को चोरी करने के लिए या पता नहीं क्या करने के लिए, बट वो पीछे से आते ही उसने एप्पल फटाफट चुराने की कोशिश की। और फिर हमने और भी आगे चीज़ें देखी, जैसे घर में वो लड़ाई चल रही थी या उसने बाहर फेंक दिया, या बैगर सिस्टम आई थिंक उसमें भी था। अपने GTA 6 में के ट्रेलर में भी हमने देखा था कि उसमें भी बैगर सिस्टम रहेगा, हम टिप जो बैगर्स को चेंज वगैरह दे सकते हैं, वो इसमें भी था और GTA 6 में भी था। तो आई थिंक न्यूअर टाइटल्स में वो चीज़ें ज़्यादा इम्प्लीमेंट करने देखने मिलेगी हमें। Okay, so this is the guy who gave the series of quests his own. Like you probably suspect, he has his own agenda in all of this. You off your tits again, Wilfred? Get your ass up.
A typical day's toil. Who in? Ah, Witcheress. What news of my wagons? No eternity is taking that damn salt to arrive. I found them. And, well, suffice to say, they'll not reach you. As for the salt, I found not one speck. I presume this comes as no surprise to you. Now. Kavir's smuggling trade is of no concern to me. Shush, shush, shush. The manticore that flattened your cart and devoured your men, quite the opposite. Manticore? No, them winged hellspawn dwell in the arse end of Creighton, not here. While Siri decides what to do about that merchant, let's take a look at the character technology that powers this marketplace. Why don't we listen in on these fishmongers? They're selling their wares, chatting up customers. Morning catch this is. Won't find none fresher. Reckon you ladies after one of them. Curse. Get this cleaned and gutted for you. You mind, dearest? Into seeing something more. Got mackerel cod, all Brexit's finest. And there is tons of tech at play here, even in this simple market stall. Metahuman tools, improved Unreal smart objects, chaos cloth, and more. Yeah, and all of this exists to make sure that the gap in quality between Siri and NPCs is as small as possible. Yeah, and closing that gap, it's not just about fidelity, right, but also authenticity. They should react to changes in the world around them. But the prisoner in pillory isn't exciting enough for Valdrest. Let's grab everyone's attention with a circus. But the great performance deserves a huge crowd though. Let's crank it up. So you are seeing tons of optimizations here to many of Unreal systems, including an entirely new Unreal animation framework, allowing us to fit easily in our 60 FPS budget, not just in rendering, but also with room to spare on the game thread. Over 300 animated skeletal mesh agents all going about their business. And the whole point is to leave breathing room for developers like you to introduce the gameplay and the systems that your players expect, empowering you to make your worlds come to life without Unreal standing in your way. You are right. That's the open world RPG that we're making. But before we wrap up, how about one final check-in with Siri? We are making this game to be the most immersive and ambitious open world Witcher game ever. And we are making this a reality thanks to our work on Unreal with the team at Epic. I think what we are doing together is going to bring in a new generation of open world RPGs, and I'm so proud of what we accomplished so far. We are too. So we're almost done, but before we go, here's a small gift for all Witcher fans. A first look at Lanexeter. भाई साहब Onward, Kelpie. We've worked. भाई अब मज़ा आ गया देख के। भाई एक्साइटमेंट बढ़ गई भाई। डेमो लाके इनने जो क्या बोलते हैं उसको हाइप बनाई है ना, क्योंकि भाई मुझे लग रहा था कि विचर 4 की जितनी हाइप होनी चाहिए उतनी थी नहीं, बट अब तो भाई हाइप बहुत हो गई है। एक्साइटमेंट भी एकदम पीक लेवल पे हो गया है। तो भाई अब कुछ नया आएगा तो रिएक्ट करेंगे इस पे और देखेंगे, जैसे कि कोई नई गेम आएगी जो इंटरेस्टिंग होगी तो उसका भी रिएक्शन में डालूँगा। और मुझे जो रिएक्शन वीडियो है वो अभी पिछली बार मैंने एक डाला था मुक्ति का और इसका, तो आई थिंक अच्छा लग रहा है मुझे रिएक्ट करने में, चीज़ें समझने में या फिर उनके बारे में बताने में जितना मुझे मालूम है। तो जो भी नए गेम प्लेस आएंगे उस पर भी रिएक्ट करेंगे और बताना ये रिएक्शन कैसा लगा आपको। तो हम मिलते हैं कोई नेक्स्ट गेम के साथ, कोई नेक्स्ट गेम के रिएक्शन के साथ। तब तक के लिए बाय।